अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को प्रूव करना। तो आइए पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रूफ जो है ना वो हम लोग प्रूफ करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। F is equal to minus kx, and by definition of second equation of motion, by second law of motion, सेकेंड लॉ जो है ना वो है F इज इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट के अपॉन एम, वेयर के इज कांस्टेंट, constant k is constant of a spring giving different values for different material। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे साथ एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक बॉडी अटैच्ड है, बॉडी ए। इसका जो लेंथ है वो है एक्स नॉट, और यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग को खींच के बॉडी को आगे ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ये हो गई ये एक्स नॉट हो गए, और ये जो है ना एक्स हो गए, ये कंप्लीट जो है ना एक्स वन हो गए। तो बॉडी जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हरकत शुरू कर देता है, एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, वेयर ओमेगा इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ स्प्रिंग which is directly proportional to k, which is directly proportional to k and inversely proportional to m, to mass of a body m। Therefore omega is equal directly proportional to k, omega is inversely proportional to m, k upon m, omega is equal to k upon m। Omega square is equal to k upon m, omega square is equal to k upon m। Putting this equation in equation number 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारे साथ प्रूफ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।